Jai Hind, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, good evening. My name is Rajiv Bajaj and I am as usual with Advocate Pradeep Nambiar and we are both together on Nation Now. प्रदीप जी, एक बार फिर हमारे पुराने मित्र बिल्कुल सर, मिशाल बिल्डर्स, यस यस यस, जबरदस्त लोग हैं यार. अजीत जैन और नवीन जैन साहब बहुत जबरदस्त लोग हैं. उदय साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कमिंग, सो नाइस ऑफ यू, रियली वंडरफुल. आपने जो कुछ कहा पिछली मर्तबा, आपकी वजह से ना जाने कितने लोग और प्रेरित हो गए अपनी कहानी सुनाने के लिए. थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ओवर हियर. यू आर फ्रॉम द कॉमराडरी सोसाइटी. कॉमराडरी, camaraderie, it's the same thing, right? Camaraderie. The CAM is a German way of saying it, but and camaraderie society is suffering the same thing as everybody else connected to Mishal Builders. Isn't that right? Yes. Could you speak a bit louder, please? Absolutely, sir. correct. तो आप बताएं अपने बारे में सर. पहले तो अपना नाम बताएं. कुमार कृष्णन, सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ द कॉमराडरी सोसाइटी, 11th रोड चेंबूर. जी, और क्या हुआ है आपके साथ सर, जरा बताएं. 2010 में हम लोग ने साइन किया एग्रीमेंट, डीए यानी डेवलपमेंट एग्रीमेंट. या किसके साथ? मिशाल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड. मिशाल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में कौन है सर, जरा जोर से बताएं. नवीन जैन और अजीत जैन. क्या बात है सर, नवीन जैन और अजीत जैन. नाम याद रखिएगा, नवीन जैन, अजीत जैन जी. बाद में इन 2018 we vacated our building and handed over the plot to the company builders, and in somewhere around March 19 they got the plinth. Yes. They got the plinth. Okay. Then afterwards, up to March 19 they paid rent for 8 months. From April 19 till date they have not paid rent. For 3 years. 38 months. 38 months. They are not 3 years and 2 months. Yeah. Right. We have got 8 citizens, senior citizens in our building. All have broken the FDs and all life savings are all gone, now down the drain. And we have lost 10 lakhs to 12 lakhs each member, the building. Now we are on the roads now, practically. But you've got a very favorable order from the High Court. We got the High Court. We approached the High Court in September 21. We got a good order. But last month, April 20th. According to the order, they have to fulfill all the conditions of the order. Till date, they have not done anything. Right, प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ, जिस विषय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसके बारे में उसका पूरा विश्लेषण हम लोग उदय जी से लेंगे. लेकिन पहले मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ कि ये तो ऐसे लगता है कि अजीत जैन साहब और नवीन जैन साहब जो हैं, ना कोर्ट को कुछ मानते हैं, ना कानून को कुछ मानते हैं, ना देश के कायदे कानून को कुछ मानते हैं. मतलब क्या है, मतलब दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार हैं क्या, क्या है? अभी जितने हम लोग रिएक्शन मिल रहे हैं, जितने सीनियर सिटीजन्स के बच्चे बाहर कनाडा, यूएस, सिंगापुर, मलेशिया, जहां जहां से लोग फोन कर रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग अस कि आप इनको अरेस्ट कराओ. नवीन जैन, अजीत जैन को अरेस्ट कराओ. वहां के इनके जो बच्चे हैं वो, बिकॉज कितने साल घर के बाहर रहेंगे, दे आर पेइंग देयर ओन रेंट, मनी इज गोइंग फ्रॉम देयर पॉकेट. जैसे बोला 18 से 20 लाख उनका खुद का खर्चा हो रहा है. ये खर्चा करके भी दे डोंट सीम टू बी सेंसिटिव. देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. दे डोंट नो व्हेन द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट, कभी क्या होने वाला है. अजीत जैन, तो जितने भी लोग हैं कहते हैं प्लीज इफ यू कैन डू समथिंग, सी द क्रिमिनल कॉग्निजेंस अगेंस्ट दीज बिल्डर्स. बिकॉज 20 से 25, हमारे पास 18 का लिस्ट था, करीबन 20 से 25 प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास. मोस्ट ऑफ दैट they are not doing it. बोले इस बिल्डर को दे दिया, इस बिल्डर और जैसे कंसर्न अबाउट सीनियर सिटीजन, दे आर सेइंग अब इनके उम्र और हमारी कंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है. उम्र तो उनके ऐसे ही हो गए थे, बैग्स तो वो ऐसे ही ले रहे थे. हमारा डिले जरूर हो गया है, बट मेडिकल हेल्थ को और कंस्ट्रक्शन को आप कैसे जोड़ रहे हो? Do we have any information about? Do we have any? And I ask all of you. Yes. Do we have any information? Yes. कि ये जो 25 प्रोजेक्ट हैं, बिल्कुल, मिशाल कंस्ट्रक्शन के, बिल्कुल, उसमें से क्या एक भी कंप्लीट हुआ है? एक दो, मगर सर टोटल कंप्लीट कुछ नहीं हो गया. जो कुछ कलीना में एक गुलिस्तान कंप्लीट है, मगर उसी नहीं मिला है. उनका भी समस्या चल रहा है. बहुत सारे अभी जो मैत्री है, जहाँ पे इनके ऑफिस है, आई थिंक ऑपोजिट द क्यूबिक मॉल, जहाँ इनके ऑफिस है, दैट वाज अमंग द फर्स्ट बिल्डिंग्स. हिज वाज वन, theirs was the other. ये सब 2008, 2009, 2010, 11, 12 में ही हुआ है. एंड उसके बाद काम तो कुछ हुआ नहीं है. फ्लैट भेज दिए, सेल कंपोनेंट भेज दिया,
पैसे कहाँ गए किसी को मालूम नहीं है. यू कांट ट्रेस देम टू देम. अभी पैसे भी गए, लोगों का काम भी नहीं होगा, जाएंगे कैसे? लोग अपने घर से पैसे भरा. सर, एज यू आस्क देम, हाउ यू फेसिंग योर फैमिलीज? दैट्स एग्जैक्टली. आज द कंट्री, the government has to take a stand how it's going to deal redevelopment, because 50% of the buildings in Mumbai, Navi Mumbai and Thane is going for redevelopment. So you need to have proper guidelines, a very stringent guidelines. Sending them to jail probably is not the answer. जैसे सब लोग बोल रहे जेल भेजो, जेल भेजो. They want the blood, they want blood. They're very convenient for them. हम जल जगह बैठ जाएंगे, आप देख लो. Now you need to find a way how these things are going to become. Home Minister or the Housing Minister's got a great challenge before him. Yes. If you're talking about 30,000 buildings, अगर societies के बात कर रहे हो और 10,000 के आसपास अगर redevelopment जा रहे हैं, look at the quantum. Some decision has to be taken at the ministry level. उदय साहब, आप बताएं. ये डेवलपमेंट प्रोसेस का एक्चुअल जो स्टडी है, हाउ ए बिल्डिंग विच इज़ dilapidated should be demolished and constructed and handed over to the residents on time. This is not studied at all. No formula. Just demolish it. Wait for IOD, wait for CC, wait for OC. This flow is going on. Even after having this many problems, nothing is happening. In effect, what you're really saying is, nobody has worked out the series of steps required that, or a particular format that every builder will have to adhere to in the redevelopment process, right? Yeah. See, when you are demolishing a building, you should have this. Yes. What are the demands of the residents? You format it. You have a development agreement, but nobody listened to that development agreement. It goes to court, it prolongs for 10 years, 15 years, nothing happens. This should not happen. This should be regulatory authorities come forward and format exact form of doing that thing. You have so many things, so many factors in it. Like BMC is involved, MADA is involved, SRA is there. I mean, so many factors are there. You have to streamline them and come out with a formula. You have a RERA with you. In RERA, you cannot go because society is considered promoter. You cannot go to a RERA. So you are debarred from this thing. So this flat buyers have to go. They have to form a association of 51% of that thing. Then only you can take it. And second thing, if you want to cancel the DA, you have to form an association. Then go to DA, RERA. Then only you can restart the work of giving it to somebody else. Okay, I cancel the DA. Then what? I have some dues with me. मेरा 18 करोड़ रुपया मेरे को मिलना है, for example. So who will pay that amount? You can, RERA can simply. सर, इस 18 करोड़ के बारे में जरा बताएं. How is it 18 करोड़? जो एक बार फिर आपको बता दें, ये जिस 18 करोड़ की बात हो रही है, वही मिशाल बिल्डर्स की ही बात हो रही है, यानी नवीन जैन और अजीत जैन साहब. जी सर. That includes my 48-month rent reduce and corpus fund balance and FSI difference and 2-3 heads are there. Money he has to give the society and society members. Each member around 22 lakh rupees he has to pay according to DA. According to DA, he has to pay. And DA matlab development agreement. 48 months rent is pending. We have 51 members in our society. Around 20 people are senior citizen, and around 5 people are widows. And poor people are staying. Some vegetable vendors, auto rickshaw drivers. How can they manage 48 months without? हमारे दर्शकों को याद होगा कि इनकी सोसाइटी के लोग यहीं पर आए थे. सर, क्या नाम है सोसाइटी का, जोर से बताएं. श्री गुरुदत्ता सोसाइटी, श्री गुरुदत्ता सोसाइटी, तिलकनगर चेंबूर. यहाँ पर लोग आए थे और उन्होंने क्या कहा था, प्रदीप जी याद होगा आपको, क्या कहा था कि बजाज साहब रस्सी दे दीजिए ताकि हम लोग अपने आप को फांसी लगा सकें. अब इतने गरीब लोग, उन सब लोगों को झांसा दिया गया, धोखा दिया गया. यह कहा गया कि इतने साल में, 3 साल के भीतर आपको बिल्डिंग बन जाएगी, आलीशान घर आपका मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. सब लोगों ने हामी भर दी, सब लोगों ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया. यह कहा गया कि सबको घर का किराया मिलेगा, जब तक कि आपका घर आपको नहीं मिलता है. आज तक वो भी नहीं मिला.
तो सर ये बताएं, just before I go to everybody else, In my case, 2010 July, we signed the DA, development agreement. so by 2013 you should have got it. Yeah, 2013, 30 months time is provided to him. And from 2010 onwards, he started collecting money from the buyers, flat buyers. He started selling the flats. That in one case, he has collected 1 crore 56 lakh rupees, offering him 2,000 square feet in our building. 13 years crossed, and he hasn't got a single flat till today. Right. The And when you, sir, and sir, from 2010 onwards till 2015, he went on collecting money. I know some people paid 1 crore, 20 lakh, 50 lakh. So that money, where this money has gone? no sir, but one thing I'm asking you, जब आपने नवीन जैन साहब से या अजीत जैन साहब से, यही नाम है ना, जब इनसे आपने पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, हमारी बिल्डिंग दो, हमारे फ्लैट दो या हमारा पैसा दो, तो क्या कहते हैं आपको सर? See, उनके पास रीजंस है, ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सॉरी, कोविड आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, कोविड के पहले कुछ रीजंस बताता था कि वो कुछ ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, दिस एंड दैट. ही वेंट ऑन लाइंग अबाउट एवरीथिंग. सी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज थिंग्स, ही हैज टू डू इट. दैट इज हिज टैलेंट. दैट इज प्रदीप जी आप इधर पूछें, Yes, yes. सर से आप पूछें कि what are they facing? I mean, this is terrible. I tell you what. Yes. I have to say this. आप देखें 13 साल से 2010 में एग्रीमेंट साइन हुई है, और जो 2013 में फ्लैट मिलने चाहिए थे आज तक नहीं मिले. आज तक लोग सड़क पर हैं. उनको जो रेंट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला. लोग कैसे जी रहे होंगे सोचकर ही दिल जो है घबरा जाता है. मेरी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है. Government has to take a stand. The housing minister should take a stand. SRA में reforms ले रहे हैं. Sir, SRA में reforms ले रहे हैं. Mr. Anand, the reforms housing minister is taking. SRA उन्होंने कहा कि all clearances immediate. No office, no tables, no divisions are going to stop the SRA clearances. You got the order in your favor? Yes. The High Court has given you an order, but there's no implementation. That's what the So yes. we got the High Court, Honorable High Court's order on. Speak a bit louder. Yeah, we got the Honorable High Court's order on 20th of April. बिल्कुल. And हमें उसके बाद हमने 2 रिमाइंडर भेजे हैं उनके लीगल काउंसिल के थ्रू. आई एम श्योर Ajit Jain and Navin Jain would have got it. By 20th of May, they would have had to comply with all the orders. As on date, the court is on vacation, but they are as on date in contempt of the deadlines set out by the court. Have they complied with a single Not a single order has been complied with. There were 6 clauses of the order where they had deliveries with the clear dates as written down by the Honorable Justice, and they have not complied to even one, in spite of our 2 reminders that the Society Honorable Secretary has sent them through their legal counsel, legal lawyers. Nothing has been complied with. The honest fact of the matter is we only want them to comply with the Honorable High Court's orders. That is in the interest of everybody. Every society will have to stand up to take legal action either today or to tomorrow, whether it is a civil or a criminal, because we have had numerous discussions, and all the members are extremely tired with his lies, blatant lies. Kitna jhoot bolega, disrespect for senior citizens, okay, and the way he talks to senior citizens behind their back. I have been witness to every single aspect of Mr. Ajit Jain and Navin Jain's behavior, especially with related to senior citizens. He runs a business model whereby he tries to quote highest to get the deals, and later on he tends to default. The question is, the sales of all the projects, all the houses in the various projects which has been done against RERA norms by selling more, by accepting 100% money upfront, giving huge discounts, and the money not being used for the construction of the building. If you go to any building and check the design
of the IOD approval with the Bombay Municipal Corporation and go and check the live measurement, you will find a difference of at least 30 to 40%. In our case, he had promised us in the agreement 42% extra carpet. It's agreement. Yes. And when we measured the plinth after the court order, it is all but 26 cents or all but 26% above our existing carpet. How did he do this? And this is not done today or yesterday. This has been done in 2018 after we sent this thing. So there is definitely too much of deceptions to the entire stuff. How much of the building has been constructed? Only up to the plinth level. The plinth level has been constructed, and we are now. The court, Honorable High Court, has forwarded the matter to the court arbitration. We believe in law. We will follow the steps of the law. But what is most important is, at the end of this, if each of the society has a claim, I heard my friend here talk about 18 crores. I'm sure we will also have something approximately to 10 to 12 crores of claim on Mishal. If all these 15 or 16 societies put claims equivalent to that amount, plus minus 15-20%, we are talking about 200 crores. How is this going to be enforced? How is this going to be enforced? Sir, what about the sale component? They say, जो information हमारे पास आ रहे हैं, करीबन 200-300 करोड़ already sale component से ले चुका है. ये पैसा है किधर? 200-300 करोड़, 300 करोड़ के आसपास आप जो बोल लोग कितने big society that is total 400 crores. तो एक 25 societies है जहाँ sale component उन्होंने बेचा है, पैसा ले चुका है. Where is the money? Where is the money? This is the fit case. Where they say fit case for FIR of criminal cognizance being applied here. FIR has to be filed. Both the builders have to be taken into custody to find out where this money trail is gone. This is not a solution, but at least somewhere पैसे तो मिलना चाहिए. शनॉय जी, आपका ये problem है. High Court का order का अवमानना and deception right from the first. Intention to cheat, intention to deceive. Already there plinth ही आपका short है. हर चीज शॉर्ट है. उदय जी बोल रहे थे, उनका भी शॉर्टेज है. जो प्रॉमिस किया है सबसे बड़ा उनका जो एरिया, कारपेट एरिया, जो एक्स्ट्रा एरिया मिशाल डेवलपर्स का हमेशा सबसे ज्यादा होता है, बट एक्चुअली में सबसे कम हो जाता है. बेसिकली अगस्त 18 में हम लोग ने खाली कर दिया था प्लॉट. अभी 4 साल हो चुके हैं. उसका खाली अभी तक प्लिंथ का काम हो चुका है. और उसने भी सेल कंपोनेंट से पैसा लिया है. बट ही डिडंट बॉदर टू गिव द रेंट टू द टेनेंट्स ऑफ सीनियर सिटीजंस. बिल्कुल. हाउ आर लिविंग? नो, वी आर कहां से? जब जो भी जेब से पैसे जा रहे हैं, जो भी एफडी आया है उससे जा रहे हैं. मतलब पुराना जो आपका एफडी वगैरह था वो सब तोड़ दिया. सब डैडी का जो भी सीनियर सिटीजन का एफडी है वो जा रहे हैं. So all their life savings, all this particular building, most of the Reserve Bank of India के staff थे, retired staff थे, वो सब इतना dilapidated building था, उन लोग पहले से 90% लोग छोड़ के चले गए थे, और बाकी जो बचा, they are eating into their savings. जो भी RBI से उनको जो retirement benefits मिला, ये पूरे इनके rent देने में चल रहा है. This is what Mishal Builder is doing, sir. And the most important thing is the deficit area. एक तो जो प्रॉमिस किया वो भी एरिया आप नहीं दे रहे हो. जो एग्रीमेंट है इतना चीटिंग, यानी हर चीज में our intention is clear. The intention is only to deceive the people. And the attitude of senior citizens की तरफ, that's terrible. Attitudes, he says they have become old, so what if they're carrying urine bags? We are not responsible if they would have grown. They would have grown old anyway. They have grown. Yes, they would have grown old. Now here, I would like to ask, just before we started this program, could you come a bit forward, please? I would like to ask you. You had said something that some of the senior citizens in your society, क्योंकि आपकी जो छोटी सी सोसाइटी है, ज़्यादा लोग नहीं है, 12 करीब लोग हैं, they have told you कि यार हमें वापस अपने पुराने घर में जाने दो ताकि हम लोग वहाँ मर सकें. Is that true? Yeah. So my mother is 80. She's in the last stage of Parkinson's. Okay. Good Lord. And she's totally on a wheelchair. And her only last want is to go back to the house that she has lived in for the last 50 years. And finally, she says, I want to go back to that house. Deepak Shenoy's father is 85. He's already, in a very, very old state. He's got numerous medical problems. All want to go back and spend their last few years or days or whatever in their flat. It has already taken us 5 years. And our problem is, for the last 3.5 years, we have tried to patiently negotiate with Ajit and agree some middle step to see how we can proceed with it favorably for both sides. What has happened is every time he agrees to something
and we have all this on record. He has gone back on his word numerous times, just not once. We have had 12 meetings during COVID, pre-COVID, after COVID, and we have the top witnesses, which I don't want to name, who were part of our meetings. All these agreements that he had said and signed, we should take minutes after the meeting, has all been flouted. Not only that, just, can I have this? This document here. The court order. Now, here's the court agreement. Yes. This is actually a consent agreement. Yes. Mr. Navin Jain has signed this agreement. Yes. बिल्कुल. Exactly. Yes. He has signed this agreement. Yes. In the presence And of the justice. yeah, of course, in the presence of the judge, Justice Kulkarni. Justice Kulkarni. Now, and 1 month has passed. He was given deadline कि 7 days में इतना, 10 दिन में आप ये करेंगे, 11 दिन में ये करेंगे. Has he taken even one step? No. He has not even bothered to write a message to the society. The society, at every expiry of every clause of the agreement that he has signed, we have reminded his legal counsel and his lawyers. No response from that side. And obviously, we are unable to do anything because the court is on vacation. No, but hold it a minute. So in effect, all right, but the court will come back. Yeah. I am reasonably certain because the High Court takes very serious will take a very serious view of this. Could you tell us, please, what is it that you want now to be done? Are you going to go on with Mishal, or are you saying कि भाई हमारी जमीन हमें वापस दे दो, हम किसी और बिल्डर को लेके आते हैं, या अपने आप हम लोग रीडेवलप करेंगे? तो हमने काफी क्लियरली कंसेंट ऑर्डर में हमने जज के सामने ये बोला है कि हमें आप प्लीज जमीन वापस दे दो. That is point number 1. And court has agreed. Court has agreed, and Mishal has also agreed. That's why all the signatures are there. Most important, Mr. Navin Jain of Mishal Builders has also agreed. Yes, and he has signed. Yes. हमें सारे के सारे ओरिजिनल डेवलपमेंट एग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल रिटर्न करे सोसाइटी को, एंड रिटेन कॉपीज, वो भी ये कंसेंट ऑर्डर में लिखा है. ये भी लिखा है कि within 15 days he has to obtain the BMC NOC and hand it over. The honorable judge has given us the approval to appoint a new redeveloper so that the senior citizens don't suffer and we can go ahead with the project. This case has been moved to an arbitration court for all the other financial disputes, which will be run over. That's a separate issue. Absolutely. That's a separate issue. Right. Right. So, sorry, Pradeep, you were saying. Yeah, because Important thing. When we go for some settlement, he says, "आ जाओ, settle, बात करो." He talks about his claim of 3 crores. हमें 3 crores दे दो, छोड़ देगा, 45 छोड़ देगा. What about our claims? वो छोड़ देना, भूल जाओ. मतलब जो आपको मतलब 30 महीने से he's 38 months और 30 महीने से जो आपको रेंट नहीं दिया गया और बाकी सब चीजें उसने कंप्लाई नहीं करी हैं, वो सब भूल जाइए. मेरे 3 करोड़ दे दीजिए बस. 3 करोड़ क्या लॉजिक है? आपने ब्रिथ लेवल खर्चा होगा 3 करोड़ क्या? सर, उदय साहब आप बताएं, ये is that the way forward then? That go to court, get a new developer, or what is the way forward? See, new developer, getting a new developer, probably court gives an order, you have to honor it. But thing is that what you do with your dues? He owes you a lot of money, 3 crores, 4 crores he owes you. What about that money? And you are suffering. How you are going to, see, you should get a compensation for your suffering also. You suffered 10 years, 5 years. Your mother, your sister, your father, everybody struggled to get this flat. You also running to court and paying money and time, wasting your depression. How will you compensate all these things? 13 years, 25% of my life is spent on this thing. What am I getting? I am getting 610 square feet. For 610 square feet, as a secretary, I am fighting for 51 members. And if I am not, finally after 13 years, I am not getting that thing. And I have to fight, I have to go to so many people. I go to court, I go to MADA, I go to BMC, I go to police, I go to EOW. Nothing works. कहने का मतलब ये हुआ कि जिंदगी में और कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है. 25% of my valuable time, 25% of my valuable lifetime I spend on this project. Chasing my flat, my FSI, my this, my... Chasing Pradeep ji, chasing Ajit Jain and Navin Jain. एक तो पूरे जिंदगी भर के कमाई एक फ्लैट में डाल दिया.
जिंदगी पर चला गया और रीडेवलपमेंट के लिए बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, बाकी जिंदगी जो बची थी वो उसमें चले गए और बच्चों समेत द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो अफेक्ट, लाइक ही इज द नेक्स्ट जनरेशन, नाउ ही इज गोइंग टू कोर्ट, फिर टू पोस्ट, यूएस से आए, कोर्ट कचहरी में अपने आप को डाल दिया कि 80 इयर्स मदर है, अब मैं क्या करूं, मैं भी इसमें काम पे लग गया, यानी फादर मदर भी काम पे लग गए, बच्चे भी काम पे लग गए. नाउ एज यू सेड, व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज freezing the accounts of these builders. Now very cleverly they say that none of the personal accounts में कुछ भी नहीं है, now खुद के नाम पे प्रॉपर्टीज है ही नहीं, तो फैमिलीज के प्रॉपर्टीज अटैच करे. I mean we are asking for solutions. What is the solution? Now 18 करोड़ इनका है, 10-12 करोड़ इनका है, 25 सोसाइटी मिलके करीबन 250-300 करोड़ है, and they have enjoyed life. ऐसा नहीं है कि 300, 350, 400 करोड़ तो ऑलरेडी पब्लिक से ले लिया है, सेल कंपोनेंट से पैसे ले लिया है, of course they have used it. So where the point is, criminal cognizance तो होना ही चाहिए, attachment of properties of the entire family, sir. Attachment होना चाहिए. First I think you need drastic steps. The ministry has to take, the home ministry, the housing ministry have to take drastic steps, because this is दुनिया साल भर, I mean the entire life के savings इनके चले गए. एंड ऐसे एक केस नहीं है, हमारे एक ही हफ्ते में, एक महीने में हमने देखा 25 से 30 बिल्डिंग एक एक बिल्डर के इफेक्टेड है. 50 बिल्डिंग हमारे पास मैटर्स आए हैं जो इफेक्टेड है. कलीना से लेके आप देखोगे अलग अलग जगह पे लोग बाहर गए, आईओडी है, बिल्डर ने बोल दिए आईओडी के बाद पेमेंट देंगे. अरे आईओडी के बाद पेमेंट देंगे तो पहले आपने खाली क्यों कराया? और कभी कभी बिल्डर और बीएमसी मिलके आके लाइट और पानी काट करके लोगों को बाहर डाल रहे हैं, और जबरदस्ती फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निकला, फिर बोलते बफर जोन के प्रॉब्लम, त्रिधातु वाले उसका प्रॉब्लम था, सब साइन डे साइन साइन कर दिए, बोले भाई आपका बफर जोन का प्रॉब्लम है तो 10-10 स्क्वायर फीट और कम करते हैं. फिर बोला डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे और 5-5 स्क्वायर फीट कम कर रहे हैं. यानी जो बोले हैं वो काट के 40-50% जो बोले थे वो आए 30-35% तक आ गए. 30% भी मिल गया तो बहुत खुशी, अब 30% भी नहीं मिल रहा है, जो गिन रहा है बोलते उससे भी कम आ रहा है. तो यू नीड very drastic steps to be taken by the government. The government has been doing in SRA, sir. SRA में उन्होंने क्लियर किया कि 5 साल में अगर आपने किया नहीं है ये पूरे प्रोजेक्ट बाद में माड़ा वापस लेगा, या whichever the concerned SRA, they will take it back. Even in spite of the very fact that you have taken loans on this project, you are liable for that. The land will be taken by the government. You need, what are we going to do in redevelopment? Redevelopment private है, तो आप क्या करोगे? तो बिल्डर के पूरे एसेट्स प्रॉपर्टीज इस चीज को आपको सील करना पड़ेगा. यहां पर जितने हमको रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग जगह से, इनके जो रिलेटिव्स है, अलग अलग जो अफेक्टेड पार्टीज है, दे से क्रिमिनल कॉग्निजेंस अगेंस्ट Ajit Jain, Navin Jain and the entire family. And what was happened was, अभी कुछ लोगों ने हमको मैसेज भेजा, कुछ लोगों ने हमको बता दिया है कि मिस्टर नवीन जैन इज ऑपरेटिंग थ्रू हिज फैमिलीज अकाउंट्स. यानी कोई नया टेंडर भर रहा है एप्लीकेशन उनके फैमिली मेंबर्स के माध्यम से, फैमिली मेंबर्स के माध्यम से, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट सम कंपनीज के नाम हमारे सामने आए हैं. वी विल बी फर्स्ट सेंडिंग हिम sort of information through mail if it is authentic, नहीं authentic, उनके रिएक्शन के. But these things are dangerous. You are still in the business, you are conducting your business, and the people have lost everything. They have lost money, they are continuously losing money, they have lost their houses, they are not going back to their houses, they don't know when it's going to come, nothing is for them. जब इनके पास कुछ भी नहीं है, सरकार has to step in. The government has to step in to protect the rights of the senior citizens, especially the senior citizens, because old buildings are always with the senior citizens. सरकार को कुछ करना पड़ेगा. प्रदीप जी, उदय जी, And criminal cognizance is the way. और बाकी सब लोग जो यहाँ पर हैं, उदय जी, you would know about this. मुझे ऐसा लग रहा है कि these guys, this new set of builders, बिल्कुल सर. these new fly-by-night operators, Yes. एक जमाने में जिस प्रकार महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बाकी हर जगह पे जो चिटफंड ऑपरेट हुआ करते थे ना, डबल योर मनी स्कीम, यू नो, गोट फार्मिंग, दिस दैट, ये पोंजी स्कीम की तरह ऑपरेट हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर लोगों को झांसा दे करके फंसा लो कि मतलब बाकी सब लोग जितना ऑफर कर रहे हैं उससे 10%, 20% ज्यादा दे दो, मीठी मीठी बातें करो, सोसाइटी को अपने साथ ले लो, और उसके बाद सबकी आप ऐसी की तैसी कर दो. सर जरा आगे आ जाएं सब लोग प्लीज. माय पॉइंट इज जैसे अभी उदय जी ने कहा, अरे सारी जिंदगी बीत गई एक फ्लैट बनाने में, और बाकी जिंदगी बीत गई उसके रीडेवलपमेंट को चेस करने में. मतलब हद होती है. किसी और मुल्क में, किसी डेवलप्ड मुल्क में कहीं पर भी अगर ये अमेरिका में केस होता
all of you would have got compensation of at least 5 times what you are owed. Let's be very clear. Sir, आप कुछ बोलने वाले थे. मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि all these builders are part of the Builders Association. Even the Builders Association needs to take cognizance of these type of rotten builders who is spoiling the entire fraternity of the builders. I can name thousands of builders who have delivered, developed, or at least if there is a problem, discussed with the society and the members and amicably resolved. Builders like this have brought the entire builders community down, and the Builders Association will have to take cognizance and ensure that they have some amount of rules among themselves, and where people are not following these rules, they have to be out of the Builders Association, or they have to be flagged that these are not certified by the builders. This will help the societies. Now, Pradeep ji, Uday ji. No, I'll add one thing. The root of this problem is corruption in our system. That is a fundamental problem. You have to control that thing. I heard that every square feet are built is bribe is 335 rupees a square feet. 335 rupees per square feet. Wow. Is the bribe amount. Bribe to all mechanism, MADA, BMC and all the regulatory authorities. No, not all. In MADA only. In MADA only. So this बाकी सबका अलग. You have to eliminate this corruption from our society, from our administrative system. Regulatory authorities should come out clean. If you maintain this system with the corruption, things will be like this only. Nothing will come out correct on time, and in a designed fashion, nothing will come out. और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या एक जमाने में होती थी, आज भी चल रही है, वो थी किसानों की आत्महत्या, फार्मर्स सुसाइड. क्या आज की तारीख में सरकार ये चाहती है, अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए, क्योंकि द हाउसिंग मिनिस्टर इज अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स, एंड सो फार हैज बीन अ वंडरफुल मिनिस्टर. क्या आप चाहते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, क्या वो आत्महत्या करें? क्या 10, 15, 100, 200 आत्महत्याएं होंगी, तब जाके क्या सरकार जागेगी, तब जाकर के क्या सिस्टम जागेगा? आई होप इट डज नॉट कम टू दैट. Number 2, what this gentleman said right over here, the builders associations must be very, very clear about the rotten people within their system. Otherwise, a builder will always be a dirty word in this part of the world. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Advocate Pradeep Nambiar ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार और जय हिंद.